12 अक्टूबर 1999 को वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और जनरल ज़ियाउद्दीन की तैनाती के इक़दामात का 12 अक्टूबर से ऐन एक रोज पहले 11 अक्टूबर को होने वाले नवाज शरीफ के दुबई विजिट से कोई बिला वास्ता या बिल वास्ता ताल्लुक मौजूद है? 11 अक्टूबर का जो यूएई का दौरा है वो दौरा डिप्लोमेटिक नहीं था, क्योंकि उसमें डिप्लोमेटिक नहीं थे बल्कि नवाज शरीफ के पर्सनल लोग थे। कोई उनका स्पीच राइटर था, कोई उनके बेटा भी था, और भी है, वो लिस्ट मिल जाती है, आप लिस्ट देख लीजिए, उसका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ ये फाइनलाइज हुई थी कि ये अब इनको हम फारिग करेंगे आर्मी चीफ को। कि ये पस मंजर भी एक पुरस्कार रंग लिए हुए है। 12 तारीख को देखा कि इस्लामाबाद में जो एक्टिविटी शुरू होती है नवाज शरीफ की, वो एक्टिविटी उस वक्त होती है जब जनरल परवेज मुशर्रफ का एयरक्राफ्ट कोलंबो से उठ जाता है। उजलत की वजह ये थी कि ये मियाँ साहब जब शुजाबाद में एड्रेस कर रहे थे, वहाँ पे इनको किसी ने एक टिप ऑफ दिया कि कू जो है वो चल पड़ा है, तो आप प्रॉब्ली लेट हो रहे हैं। मैं कंटिन्यू करता बाद में, फिर तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हो सकती थी कि किसने उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन अभी अपने मियाँ साहब जो हैं वो नहीं उनको सामने लाना चाहते जिसने भी उनको इन्फॉर्म किया उसको, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं था। अक्टूबर 99 को मैं तकरीबन 5 बजे के करीब जब घर पहुंचता हूं तो मेरा टेलीफोन बज रहा था, और मैंने टेलीफोन उठाया तो उसमें पाकिस्तान के एक अहम अखबार के एक सीनियर शख्स बोल रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में तब्दीली हो गई है। तो मैंने फ़ौरन कहा कि क्या मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी है फ़ौज ने? उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तो उल्टा हो गया है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को प्राइम मिनिस्टर ने बरतरफ कर दिया और लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है, उनके बैजेस वगैरह लग गए हैं, तो ये तो जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे वो हो गया है। मैंने उनसे फ़ौरन जवाब में कहा कि आप ये चेक करें कि क्या जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी हेडक्वार्टर में एंटर होने की इजाज़त मिल गई है, यानी एक्चुअली वो आर्मी चीफ हो गए हैं। और मैंने कहा कि मेरी असेसमेंट ये है कि जनरल ज़ियाउद्दीन आर्मी हेडक्वार्टर में एंटर नहीं हो सकेंगे, और अब इस वक्त से चंद घंटों के अंदर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत फ़ौज ओवरथ्रो कर देगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक ऐसा काम किया है कि अब ये हुकूमत आप देख लीजिएगा कि आज आखिरी रात है इस वक्त। आपने स्टैंड बाय क्यों कर दिया? उसको 805 को कह दीजिए यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। ठीक है 805 it is up to you. You have to decide what to do to see for your decision. This high drama played out at an altitude of 10,000 feet exactly 10 years ago. First on 805 you cannot land at any airport in Pakistan, and you can proceed outside Pakistan. Sir, आवाज बोलो इधर। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 must land here सर, आप इनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? वकील बोल रहा हूँ, वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची ATC के साथ कर दें। ATC को कांटेक्ट कर लो क्या सर? Right now on the aircraft, he will be guided by the ATC in Karachi. Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just
tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 120. Request intention. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहा है सर? ये वेट कर रहा है, वो सीधा climb कर रहा है. He says कि I'm trying to set where I'm going up, so I have very little fuel. So he's out of already one. ये तो कोई बात नहीं बनी ना. He must land here. Land क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे हैं वापस आओ, वो नहीं आ रहा. Pakistan 805, turn left heading 240. Vector for Karachi for landing. You are hereby directed to please land in Karachi Airport. The Karachi Control Tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? The plane finally landed, but after a nerve-wracking high drama, which ended only after the loyal commanders of General Musharraf took charge of the situation. When the flight was delayed, or we were told that the arrival has been delayed, at one point the flag was removed from the car and the four-star plate was covered. That gave an impression that probably now Nawaz Sharif was in control of the situation and Musharraf is being regarded as a retired army chief and he'll be received in that capacity. Soon after his appointment, General Butt ordered the removal of Chief of General Staff General Aziz and Rawalpindi Corps Commander General Mahmood. But General Ziauddin Butt's orders were rejected by High Command. General Aziz, General Mahmood, Director General of Military Operation General Shahid Aziz, Corps Commander Karachi General Muzaffar Usmani and Brigadier Salahuddin Sati. October 12th, Pakistan's Army Chief, General Pervez Musharraf, returns home after visiting Sri Lanka. All seemed in order. Rajita, Pakistan 805. I was totally relaxed and didn't expect anything other than I was preparing to meet the Prime Minister. And I was sort of putting my thoughts in order. What all I'm going to talk to him on how the army could contribute towards improvement of governance. What Musharraf didn't know was that 2 hours earlier, he'd been sacked by the Prime Minister. On entering Pakistani airspace, the pilot contacted Karachi Airport. Karachi radar, this is Pakistan 805. Be advised. The first alarming instructions from the air traffic control was the instructions that Pakistan 805, you are not permitted to land at any airfield of Pakistan, and that you may proceed anywhere else at your own risk. At this moment, I realized that something very drastic must have happened. That it has to be because of the Chief of the Army Staff. I decide that this information has to be conveyed to him. My principal staff officer, he came and told me that the pilot is inviting me into the cockpit. And when I went there, he said we've been refused landing at Karachi, and we've been told not to land anywhere in Pakistan. That is where I knew that something has gone wrong. Yes, but troops loyal to Musharraf had seized the TV station by 6:30 p.m. and stopped the broadcast of his sacking. Impression that the government was taking any action against Dini Madaris. The meeting advanced. In the seesaw for power, the government posted the police at Karachi Airport to make sure that Musharraf's plane, which was running dangerously low on fuel, was not allowed to land. So the plane with 180 civilians was diverted south. The amount of fuel which we had at this moment of time did not leave us much options. Having India on the right and Iran on the left, with sea in the south, doesn't leave much option anyway. So I did mention a field in India. I was worried that we are not being allowed to land in Pakistan
and never has this kind of a thing ever occurred. And more than that, when the pilot told me that we can only go to India, and obviously that I said, oh my dead body, we are not going there. We'll land at Karachi at whatever cost. Meanwhile, army troops had rushed to Karachi airport and taken control. Myself and some journalists, we were in one car and we were going to the airport, and then we saw a big convoy of the Corps Commander, General Usmani, and he was rushing to the airport. Usually the Corps Commander stops at signals and, not unlike the other ministers and all. And this time the convoy was unusually big, and he seems to be in a rush. And then we realized that, yes, they are in a panic. The soldiers there were tense, the people who were standing there were tense, because the news had spread that Nawaz Sharif has sacked the army chief. The people were in a mood that the army is not willing to accept it. Wireless communication was established between Musharraf and a senior army officer via Karachi's control tower. For the first time I took the mic and asked where the Corps Commander is, General Usmani. But then Iftikhar again spoke and he said, this is General Iftikhar and I request you to come back, everything is all right. I asked him what has happened, and he told me that I was dismissed at 5 o'clock and the army acted and everything now is all right at Karachi, Rawalpindi and Lahore. So the plane turned back and landed at Karachi airport, but confusion persisted on the ground. We were like guessing from some kind of symbols, like General Musharraf's car was there and he has this 4-star plate, and the Chief of Army Staff's flag there. And after like 10 minutes, this guy came out, probably a sergeant, army sergeant, and he took off the flag and put a cover on the plate. And we then thought that, he has sort of given up and he has, accepted that Nawaz Sharif has sacked him. And then after about 10-15 minutes, a colonel or a major came out of the airport, came out of the terminal in a rush, and he told the sergeant something, and the sergeant very proudly, opened the trunk and take out the flag again, and he put the flag again, and then we said, no, he actually has taken over. When I heard that Musharraf had seized power, I knew the West would perceive this as the demise of democracy in Pakistan. When the people heard the news, they were stunned at the lengths to which Nawaz Sharif was prepared to go, risking the lives of 180 passengers to stop Musharraf. I can't imagine this kind of a response by anybody. I just think that he suffers from a sense of insecurity. He wasn't sure of himself. He didn't have confidence in himself. Maybe he was too scared of me. He didn't want me to land even. Maybe he knew what, I don't know, he was maybe too scared of the consequences if I put my foot on Pakistan. But maybe he didn't know how loyal my people were. वो पहले ही से प्लानिंग कर चुके थे इस टेक ओवर करने की, और नवाज शरीफ साहब को कॉल आई, एक एनोनिमस सोर्स की कॉल आई, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब पहले चाहते नहीं थे उनको रिमूव करना, लेकिन उस कॉल के बाद उनको पता चला, खतरा भापा नवाज शरीफ साहब ने कि ये तो मुझे टेक ओवर करने वाले हैं, आर्मी मुझे टेक ओवर करने वाली है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगा दिया। आप इतने सीनियर ऑफिसर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कायम मकाम बनते हैं या ना बनते हैं, आप कोर कमांडर पेशावर रहे, आप इतना आपका क्लोज इंटरेक्शन रही है जीएचक्यू और आर्मी के साथ, आपको ऐसा फील हुआ था कि परवेज मुशर्रफ साहब एम्बिशियस थे टेक ओवर करने के लिए? अपनी ऑनेस्ट राय में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में एम्बिशियस थे, और एज अ कोर कमांडर मुझे कभी कोई ऐसी इंक्लिनेशन नहीं मिली, ना ही मैं उस चेन में था एडवाइजरी कैपेसिटी में या मैं तो आपको सिर्फ मशवरे के तौर पे नहीं, ऐसी कोई उसके इमीडिएटली पूरी बाकायदा रिहर्सल हुई थी कुछ माह पहले। अगर हुई होगी तो उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था, ना ही मेरे नॉलेज में था। नॉलेज में नहीं था। ठीक है, बस इस बुनियादी सवाल पे आ जाऊं कि
آپ کا کوئی رول نہیں آپ کہتے ہیں اس ٹیک اوور میں؟ نہیں، میں پرویز مشرف صاحب ہوا میں تھے، پرویز مشرف صاحب کا رول تھا، وہ فون سے انٹریکٹ کرتے، کس کا رول تھا اس ٹیک اوور میں؟ کون تھا وہ، کون فیس کیا؟ میرے نالج میں تو کوئی ایسا آرڈر ادھر سے اس موقع پہ نہیں آیا. پرویز مشرف صاحب کی طرف سے؟ ہاں، اگر انہوں نے پہلے کوئی انسٹرکشن دی ہو کہ اگر میری ایبسنس میں کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، وہ میرے نالج میں نہیں ہے. تو پھر آپ کے خیال میں پرویز مشرف نے کیوں نہیں کیا؟ جی دیکھیں، ریسپانسبلٹی تو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے نا، جو بھی ڈیسیژن he did not order it. پراببلی وہ، ہاں ان ٹیکنیکل ٹرمز اگر آپ کہیں کہ جس وقت آرمی نے فزیکلی ٹیک اوور کیا، ایٹ دیٹ مومنٹ ہی واز ناٹ دا ون ٹو آرڈر تکو. ہاں، اس سے پہلے اگر انہوں نے آرڈر کیا ہوا حفظ ما تقدم، وہ اور بات ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. اور بعد میں آ کے He was just informed پراببلی ہی واز انفارمڈ about the coup. جی، جنرل عزیز نے یا جنرل محمود نے